My father said, Alex, what a life is this? Anyway, you're busy. My trip and my objective was creation of prospects. The advisor needs to take care that he has legitimately sold the plan. If you want to give a 10 crore policy, it is just $1.5 million ka policy. Here there was an option of almost 7 to 8 riders in one particular plan. Ticket size bada hai, dynamics of the plan is big. The process in which you onboard the client is also very dynamic. दोस्तों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से कई साल पहले एक इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है वो एक कंपनी के साथ में काम करता था और एक इंश्योरेंस एडवाइज़र एक एजेंट के रूप में काम करता था। लेकिन 2005-2006 में समय बदल गया, क्योंकि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आने लग गए, तो एक एजेंट को फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने की ज़रूरत पड़ी और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में उसने अपनी नई जर्नी शुरू की। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा फिर से बदल रहा है। लोग जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में काम करने जाते हैं। नहीं सिर्फ एक देश का, बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं। तो मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो व्यक्ति जो कई साल पहले एक एजेंट के रूप में काम करता था, 2005-06 में वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करने लग गया। लेकिन आज उसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को फिर से बदलकर इंटरनेशनल एडवाइज़र बनने की ज़रूरत है। अब ये एक नया बदलाव है। बहुत सारे लोग इमीडिएट नहीं बदलाव को समझते हैं, उन्हें समय लगता है बदलाव को समझने के लिए, लेकिन बदलाव करना तो पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने इस बदलाव को बहुत लंबे समय पहले ही समझ लिया था। उस वक्त जब एक इंश्योरेंस एजेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र बन रहा था, उसी वक्त ये फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक कदम आगे इंटरनेशनल एडवाइज़र बन गए। दोस्तों, इस वक्त मैं दुबई में बैठा हूं और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है एक इंटरनेशनल एडवाइज़र से मिलने का, जो कि आज से कुछ साल पहले भारत देश में LIC के साथ में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करते थे। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति काम कर रहा है और वो काम को छोड़कर वो बहुत विजनरी बनकर एक इंटरनेशनल एडवाइज़र बन जाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि करीबन 2006-07 में इंटरनेशनल एडवाइज़र बन गए थे, और वो भी दुबई में आकर, उनसे हमें मिलने का मौका मिला है। चलिए मिलते हैं। इनका नाम मिस्टर एलेक्स है और मुंबई से ये दुबई में आज से कुछ 15 साल पहले उनका आना हुआ और इंटरनेशनल एडवाइज़र बने। हम मिस्टर एलेक्स से मिलेंगे और उनकी एज ए इंटरनेशनल एडवाइज़र जो जर्नी रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एलेक्स, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you, Ranjit. Thanks a million. ग्रेट। तो मुझे मिस्टर एलेक्स जानकर बहुत खुशी हुई, जैसे मुझे आपने बताया कि आप जो है LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे और अब जो है आप दुबई में एज ए इंटरनेशनल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये कैसे वो मोमेंट क्रिएट हुआ कि आप जो है वो इंडिया में थे और फिर आपका दुबई में आना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Yeah, it so happened that in the 90s, the insurance industry, towards the end of 2000, the insurance industry opened up. Insurance industry opened up करने से बहुत सारा private insurance company आने लगी. We started getting opportunities at that particular point in time. But then I happened to travel on my vacation to Singapore, Malaysia. Then I came to Dubai. And I met up with a couple of people at that particular point in time. उस टाइम में ये पता चला कि यहाँ एक्सपैट्स है, यहाँ पे जो टिकट साइज़ है
ये कौन से साल की बात है? ये 2006-2007। हाँ, तब आप आए थे यहाँ पे, घूमने Yes. आए थे आप ऐसे? Yes. अच्छा, ओके। 2004 में घूमने को आए थे. 2007 it took shape, and I met up with a couple of people. I in fact, came here. I had got an opportunity with Zurich International, और मैं Zurich International gave me 2 months time to join them. और आपको पता होगा LIC में फरवरी मार्च इतना बिजी होता है कि हम घर पहुंचते हैं 12 PM, 11:45, 11:30. Now, once I reach at that time, it becomes very difficult for us to respond to anything, to the needs of family or anything. There have been times when I get up in the morning, my daughter has left to the school. And there have been times when I reach home when my daughter is asleep. So, my father said, Alex, what a life is this? Anyway, you're busy. You have a daughter and then you don't see her and things like that. Or मैं Saturday, Sunday, I used to go to Panchgani to administer psychometric tests to most of the residential schools there, because I had a friend who was doing the psychometric testing, and I used to visit all these schools. My trip and my objective was creation of prospects at that particular point in time. But it turned out to be well. Then I thought I came here, and then as I continue with my conversation, I had an opportunity to join Zurich. But February, March होने के कारण they wanted me by the 15th of March, which was not possible for me to join. So I forgoed that particular opportunity after coming here. क्योंकि मैं यहाँ पे आया जब April 30th, April 27th I came here, because March 31st was the deadline for completion of all the submissions, and April 12th, 15th was the date wherein we had to tear the ledger pages and give it to the central office. Okay. So, so I could reach here only by the 21st. So I had forgot the opportunity of working as an operations executive with Zurich International Life. Okay. And then subsequently what has happened is I met up with almost 7-8 brokers. Now, this was typically a broker's market. This was not an इंश्योरेंस कंपनी, टाइड एजेंसी कंसेप्ट बहुत कम लोग थे. ज्यूरिक इंटरनेशनल भी एक ब्रोकर ही था? नहीं, ज्यूरिक इंटरनेशनल वाज एन इंश्योरेंस कंपनी. अच्छा. एक्चुअली इट वाज conceptualized as Eagle Star. Eagle Star के बाद Eagle Star said they stopped the operation. At that particular point in time, they said they don't want to. It was taken over by Zurich, and Zurich said they don't want the tied agency concept. They stopped the tied agency concept. Bola, we are going to terminate all the 200 people who have been with Eagle Star Zurich at that particular point in time. And Zurich said, we are going to pursue the broker's model. We will not be having a tied agency. In such an instance, somebody else came and created a brokerage and took all these 200 people on their side. And this happened in 2000, 2002, 2001. And subsequently in 2004, Continental got its license as an insurance broker. And I joined them in 2007. So after having met up with 8 to 9 brokers, I found out that all these brokers were individual brokers where they did not have a vision of what they will be doing in the next 10 years, 15 years, 20 years time. क्योंकि इनका एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन होता है, एलेक्स जी आप आ जाओ, ज्वाइन करो, एंड देन वी विल ग्रो द बिजनेस. That is what the conversation used to be. But when I met Ashok, I feel he was the smarter of the lot.
And I had spoken. He said, Alex, I'm trying to build this business. I want to grow this business in this part of the world. And currently, we have these are the licenses that we have. And I want you to join as a business head. And in 2007, I joined them as a business head to grow the business. At that time, we were having two small offices near Karama. One was on the second floor and one was on the third floor. The second floor had an advisory strength of almost around 14, 15, 16 people to 27 people. From there, we have grown to what we are today with almost around 120 advisors. आपके साथ में काम करते हैं 120 एडवाइजर्स टोटल इतने एडवाइजर्स काम करते हैं. So we pioneered see what has happened is there was limitations to appointing advisors in this part of the world at that particular point in time also, today also. The thing is, if somebody comes here, we have to give them a visa. We have to give them a labor card, for which there is a cost. Subsequently, the labor regulations and the rules changed in a manner wherein they said we had to pay a minimum amount for them to remain in the company, which means I had to show a labor value of some amount to make sure that as a company we pay them on a regular basis as long as these people are there with the company. आपने मिस्टर एलेक्स आपने कितने साल करीबन LIC के साथ काम किया? LIC में I joined in 1987, almost 19 years. 19 साल आपने काम किया. 19 साल. फिर आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया, मतलब क्यों आपने 19 साल काम करने के बाद LIC के काम को छोड़ दिया? I wanted to explore new territories because we were young at that particular point in time. So just wanted to explore new opportunities, new products, new markets, new insurance companies, and the amount of learnings that can happen is far more vast than when we are centered around a particular region and a jurisdiction. एक चीज़ मिस्टर एलेक्स मेरे दिमाग में आती है कि जब हम LIC की बात करते हैं तो वो तो भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी है, ऐसा दिमाग में आता है कि यही एक बहुत बड़ा समंदर है. लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद आपको क्या लगा कि वही एक बड़ा समंदर था या उससे भी बहुत बड़ा समंदर ये इंटरनेशनल मार्केट है? Very good question. That was the only market where clients used to pay the premium. The advisors used to get commission on the paid premium. यहाँ पे market में ऐसा नहीं था. Even though if somebody was paying $10,000 and if the client was paying monthly, as a broker we used to get indemnified commission for the whole, even though for the advance, that is, it's called as an advance commission for even though the client has paid only 1 month premium. And so when we give a portion of that amount to the advisor, it becomes a sizable amount. The advisor needs to take care that he has legitimately sold the plan, one. Second thing is, he has done a thorough fact find before he sold the plan. And eventually, that kind of earning, I don't think so anybody in India would earn for a single policy of $10,000. If the advisor earns $6,000, then you see what is the kind of earning that the advisor can make. तो ये एक बड़ी चीज़ हो गई कि मतलब मैं वहाँ पे जो पैसा कमा सकता हूँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बड़ी थी. क्या पैसा ही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे अलग करती है, इंटरनेशनल मार्केट को अलग करती है, या आपको ऐसा लगता है और भी चीज़ें हैं? बहुत सारे चीज़ है जैसे कि टिकट साइज. नाउ if you want to give a 10 crore policy, it is just $1.5 million ka policy. Today, we are selling policies for a single individual worth for $100 million. आप वो कैपेसिटी में इंडिया में आज के तारीख में भी आप
बेच नहीं सकते। $100 मिलियन यानी कितना हो गया, मेरे को थोड़ा सा बताएंगे? 100 मिलियन हाँ, यानी 1 million is 8 crores। 1 मिलियन इज 1 करोड़, ये 10 80 800 करोड़, 800 करोड़ का पॉलिसी आप बेचते हैं? बेचते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके So ओके। there is इतना a तो वहाँ पे सोच भी नहीं सकते हम। सोच भी नहीं सकते हो। एंड यहाँ पे what I found is nowadays it's far more regulated than what it is back in India. Like for example, here fact find is a thorough thing where client ka current circumstances and situations, why this plan has been sold, what is the source of income, how is he going to pay the premium, all these things matters. And here there was an option of almost 7 to 8 riders in one particular plan, which was not available in India. So the dynamics under which the plan is available here today is more dynamic than what is available. India may be like, for example, whole life is available, temporary life is available, endowment plans are available. But यहाँ पे बहुत सारा riders है जहाँ पे you can get tied on to one particular plan and sell it. So ticket size बड़ा है, dynamics of the plan is big. The process in which you onboard the client is also very dynamic. डॉक्टर जरा एडजस्टमेंट है थोड़ा कर लेना, is not possible here. I very clearly tell them whether do you have 6 months money to manage yourself. A group of 4 advisors together creating an entity and giving us, and they have been earning $1.6 million in 1 year. If you go to any client in India for SIP, you may ask for 5,000 rupees or 10,000 rupees SIP. If you have to grow in this profession, the first thing is you need to have passion. आप decide करो, ये set of clients को मैं deal करूँगा, ये set of clients को I will recruit somebody to handle this set of clients. We, as a broker, are able to create a wow feeling for our customers. एक चीज़ मिस्टर एलेक्स, हमारे इंडिया में अपने रेगुलेशन की बात की ना, यहाँ पे काफ़ी रेगुलेटेड है। भारत देश में IRDA है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फिर ऑम्बड्समेंट है, एक जो इन्वेस्टर है, एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके पास में एक रेगुलेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसको पता है IRDA को वो जानता है, ऑम्बड्समेंट को वो जानता है, कंपनीज 50 साल पुरानी है, 60 साल पुरानी है, कंपनीज़ को जानता है, या प्राइवेट कंपनी भी है तो कई सालों से उनका बिजनेस है, तो एक भरोसा है, रेगुलेशन भी है। आपने बोला यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा रेगुलेटेड हैं, तो क्या रेगुलेशन है यहाँ पे, मतलब किसका सहारा किसको है आप लोगों को? जैसे हमको IRDA का सहारा है, ऑम्बड्समेंट का सहारा है, यहाँ पर आपको किसका सहारा है इनकेस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती क्लेम देने में? तो See, first of all, the acceptance of business is very tough. इसका क्या मतलब है? Acceptance of business is very tough. आपका इंडिया में, I should not be saying this. There have been cases where somebody else goes for the medical, puts the name of the person and gets this organized. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे पासपोर्ट कॉपी देना पड़ता है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी होता है. That means I'm talking about almost 17-18 years back. This is also happening in India. So at that time, verification of identity was very essential. Who the person is, what the person is. There is no manipulation of medical in any form, where in India, if you go to the doctor, the advisor can serve. If the advisor knows the doctor very well, doctor जरा adjustment है थोड़ा कर लेना, is not possible here. That's just not possible here. You do the medical, you go, the medical report is sent to the carriers. And then the carriers have their own way of doing research on the client.
what do you call compliance on the client and Reuters में जाते हो उन लोग क्लाइंट के पासपोर्ट डाल के चेक करते हो पेप एक्सपोज है वो एक्सपोज है सो द एक्सेप्टेंस ऑफ बिजनेस इज रियली टफ सो एक बार एक्सेप्टेंस हो जाता है दैट कम्स थ्रू The other thing is the incontestability cost. Policy after 2 years is incontestable. They will have to settle the case. Now, there have been very good instances of policies jahan pe the providers have become very proactive when you know the claim under certain circumstances are not payable. The providers here have paid. This is something without the ombudsman that's happening because it's an expat market. एलेक्स जी देखिए ये बात तो है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा किया होगा ठीक है लेकिन फिर भी अगर मान लो कि वो इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि ये क्लेम पेएबल नहीं है वेराज कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये क्लेम पेएबल है ऐसे केस में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है 2 केस में चलो 100 में से 1 होगी वहाँ पर थर्ड पार्टी कोई सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी होती है जैसे इंडिया में yes, you can go to the regulator. अच्छा यहाँ पे रेगुलेटर you can go to the regulator. ओके कौन होते हैं वो रेगुलेटर Insurance authority यहाँ of UAE, yeah, अच्छा इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ UAE. And if you're selling investments, it is ESCA. अच्छा And now, if you are operating from DIFC, it is DFSA. अच्छा ओके So these regulators are very tough because there are almost 63 banks in this part of the world. There are almost 180 brokers in this part of the world. And there are almost 24 international banks and another 24, 23 local banks or 60, more than 60 insurance companies. 180 brokers, financial brokers के बात ही छोड़ दो आप. So in a small market with a population of 8 million, you see the kind of, so you need to have that kind of regulations in place to make sure that the claims are paid to the clients. मिस्टर एलेक्स मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप आ तो गए यहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटी देखी यहाँ पर बिजनेस बड़ा है यहाँ पर लोग प्रीमियम ज़्यादा देते हैं कमीशन अच्छा है रेगुलेटेड मार्केट है लेकिन चीज़ें आसान तो नहीं होती हैं फिर भी किस प्रकार के चैलेंजेस आपने इस मार्केट में देखे हैं और आपने फेस किए हैं Very true, very true. Especially when I told you, when we recruit an advisor, the first thing when anybody comes into this place is to secure a job, whether it is with salary or without a salary. So when we interview them, we know the intent with which they are applying. So today when we recruit a person, I very clearly tell them whether do you have 6 months money to manage yourself. Agar hai, and if your center of influence is good, then you come join us. You have 6 months time for which you can तो prove सर्वाइव yourself. यहाँ पे सर्वाइव करना दैट्स अ बिग चैलेंज Absolutely. और क्या इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कस्टमर वो कैसे क्योंकि यहाँ पर तो हर कोई तो इंडियन नहीं है अलग अलग कंट्री के लोग हैं हाउ इट इज़ क्या वो एक चैलेंज होता है बड़ा It is a challenge. It's not that it's that easy because the population is less. It's multi-banked. It's multi-brokers. कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है Competition है, but it all depends on how you're conversing with the client. One, how you're connecting. आपका networking कैसा है उसके ऊपर actual dependent होता है कि how you are going to be successful or not, and your level of knowledge. The biggest thing is if somebody sits before me, we share some thoughts and we share some conversations. And these conversations may, if we are able to develop a connect which binds us, then probably, I'm willing to entrust my money to you and say, Ranjit, here is the money, kindly go ahead and grow it for me. Kindly ahead and protect my assets. This is what. सो मिस्टर एलेक्स आपका वहाँ पर LIC में जो काम था एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आपने वही काम
कॉन्टिनेंटल में आके संभाला। Yes. यहाँ पर भी आपका काम जो है वही है, रिक्रूटमेंट करना। Absolutely. अब आप कॉन्टिनेंटल ब्रोकर के लिए कर रहे हो, वहाँ पर एक Absolutely. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए करते थे, यहाँ पे ब्रोकर के लिए करते थे। Absolutely. आप ने कई सारे ब्रोकर अपने अंडर में रिक्रूट किए होंगे लोग, कितने लोगों को आपने रिक्रूट किया यहाँ पर? We have recruited almost around 70-80 people. 70-80 पीपल आप लोगों ने। तो कोई आपके किसी एक एडवाइज़र का आप सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकते हैं कि वो यहाँ पे आया और उसने जो है इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को, जो हाईएस्ट सक्सेस वाला इंसान के बारे में बता सकते हैं? Yes, there have been people who were okay. In 2007 we joined. We had a lot of advisors joining us. Internally also there are so many advisors who are earning approximately $350,000, and there have been a group of 4 advisors together creating an entity and giving us, and they have been earning $1.6 million in 1 year. $1.6 million, तो कितना हो गया रुपीस में? $1 million is 8 crores. $1 million is 8 crores. 8 crores. Yeah. तो करीबन 16 करोड़ रुपया, 12-13 crore. 12-13 करोड़ रुपया वो कमा रहे हैं। Yes. कितने समय में कि ये It is just in 1 year, 1.5 years. एक साल में वो लोग इतना Yes. ग्रोथ पे चले गए? Yes. वो लोग दैट मच? But they were having knowledge of insurance. They were advisors earlier before, and that's the reason why they could apply themselves to these clients. It's very simple. Today, if you go to any client in India for SIP, you may ask for 5,000 rupees or 10,000 rupees SIP. Here, when you come in, if somebody is earning 50,000 dirhams, you can tell him, sir, you can give an SIP of a lakh of rupees. That is the difference. मिस्टर एलेक्स, आपने मार्केट को, ये इंटरनेशनल मार्केट को आपने 2007 से आप देख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका एक जो है बेस यहाँ पे तैयार हो गया है। सो इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से अब आपको क्या लगता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्केट में कई सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तब तो कम थे लेकिन आज बहुत सारे एडवाइज़र्स भी हो गए हैं, यहाँ से आगे आपको ये इंटरनेशनल मार्केट, दुबई के मार्केट में एज ए ब्रोकर, एज ए एडवाइज़र, एज ए इंटरनेशनल एडवाइज़र, क्या आपको स्कोप दिखता है इसके आगे? I think there is enough opportunities left. In the year 2012, we introduced the concept of introducers, which means उन लोग हमारा डायरेक्ट एडवाइजर्स नहीं है, बट इनडायरेक्ट एडवाइजर्स है who would be introducing business. So what is happening, there is enough opportunity for growth as a broker for us, because we in the year 2011-12 we pioneered the model of referrals, and referral business has grown continuously from within and from outside. Now we also have reputed banks, private banks, reputed brokers also referring business to us, wherein we have been growing regularly on an average at least 20 to 30%. मिस्टर एलेक्स, कई सारे लोग ऐसे हैं भारत देश में जिन्होंने जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसी को अपना समुंदर मान लिया है, हालांकि है कुएं में, लेकिन उसको अपना समुंदर मान लिया है। अब ऐसे लोग जब आपको सुनेंगे, इच्छा तो हर किसी की है कि मुझे जो है वो बहुत ग्रो करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, तो आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने जो जज किया है, और ये वीडियो जब कोई ऐसा व्यक्ति देखता है जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, करने की क्षमता तो बहुत है, लेकिन वो अपने एक दायरे में जो है वो बैठा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन इंटरनेशनल मार्केट, आप एक छोटे फाइनेंशियल एडवाइजर को क्या सलाह देना चाहोगे? If you have to grow in this profession, the first thing is you need to have passion. Second thing is you need to have discipline. Third thing is you need to continuously educate yourself in this particular field. Fourthly, you need to build your network. Fifthly, you need to set up an infrastructure for yourself to make sure
to categorize clients on the basis of ultra high net worth, medium segment, lower segment. As you grow up in the business, आप decide करो ये set of clients को मैं deal करूँगा, ये set of clients को I will recruit somebody to handle this set of clients, and this set of clients I will I'll recruit somebody to manage these sort of set of clients, and I will have the operational capability to make sure that we as a broker are able to create a wow feeling for our customers. मिस्टर एलेक्स, आपने अभी मेरे ख्याल से कितने साल दे दिए हैं आपने? 3 वो हो गए, 10 13 और करीबन 15-16 साल आपने इंटरनेशनल मार्केट Here in this international market, almost 17 years. 70-80 लोग आपके 17 years. 17 ईयर्स आपने दे दिए हैं, यू नो, आपने एक लेवल ऑफ सक्सेस को ऑलरेडी हासिल कर लिया है। अब यहाँ से आगे आपका क्या विजन है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा आइडिया दीजिए। Very good question. We are trying to develop other markets. One is we feel that India is a market of great opportunities, but there are some hindrances which are coming in play just because of the clampdown on money going outside. But every advisor will have some ultra high net worth client. Every advisor will have an NRI client. Every advisor will have that set of clients where you can give a certain amount of product. Is 20% giving 20% to the government more, or getting 80% as benefits is more? Which one do you prefer? Definitely. If I were to give you a chance, Definitely. 80%, right? Absolutely. So might as well go for that. परफेक्ट। सो एलेक्स, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो आई ओपनर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और डेफिनेटली हमारे जो दर्शक भारत देश में बैठे हैं और उन्होंने जो आपको सुना है और उन्होंने जो आपको समझा है, डेफिनेटली उनके दायरे को बढ़ाने का ये बहुत बड़ा काम करने वाला है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर एलेक्स। Thank you so much. अपना समय दिया और इतनी सारी चीज़ें हमें जो इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बताई। Absolutely, there are so many opportunities for the Indian advisors also, because today an Indian advisor not only deals with Indian clients, he has clients based in Africa, he has clients based in London, he has clients based in Middle East. Middle East बोलेगा तो GCC बोलेगा तो there are almost 5, 6, 7 countries. So you know, the opportunities for an Indian advisor to refer business to us is a huge opportunity for them. Apart from their regular income, they are having an introducer income. It's a huge opportunity for them. Perfect, great. Thank you, Mr. Alex. Thank you, Ranjit. It was a pleasure to talk to you. Same here. And share my thoughts. Thank you. Yeah.